I don't know what to call you, Mo. Do you prefer being called Mo or Muhammad? Muhammad Ali, Mo, Muhammad, either is fine. Kuch bhi chalta hai. Okay. So, Mo, tell us a little bit about your creative journey. I mean, how did documentaries happen for you? Why did you choose documentaries as your medium? Well, I knew that storytelling was my medium from much younger age. So basically, my background was always in theater, actually. And जब मैं अपनी न्यूयॉर्क में एजुकेशन भी कर रहा था, even before I went to college, मैं ली स्ट्रासबर्ग Conservatory of the Performing Arts में as a teenager, वहाँ पे मैंने summer workshops किए थे. And उसमें मेरी training acting में भी हुई थी, but mostly in stage directing. And मुझे जब से ही काफी शौक हो गया था in storytelling. तो जब मैं कॉलेज भी गया, मैंने उसी में अपना क्या कहते हैं डिग्री भी हासिल की. And then my interest turned towards film. And before I had graduated college, I had interned at the Cannes Film Festival and different film and distribution companies, just like Windstar Cinema and Fox, Fox Films in Woburn. And I started understanding the film business. And I myself, at that time, I was interning. And I decided that once I graduate college, I'd move to New York and, inshallah, start my film career. And I moved to New York, and this was in August of 2001. And next month, 9/11 happened. I was in New York. I saw the buildings fall. And that was such a seminal event for me. And especially you have to keep in mind at that time, being from Pakistan, Muslim, being in New York is a very precarious situation. And Muslims, and I think the world over, and especially in America at that time, were being really vilified. And it ended up really informing the kinds of stories I wanted to tell. Because ultimately, उस वाक़ये से पहले मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, ना तो इतना सोचा था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है या मेरी क्या कहते हैं आइडेंटिटी क्या है, what are my politics and anything. I was least concerned. But जब आप एक ऐसे environment में होते हैं जहाँ पे those things become front and center, and you yourself are so otherized, it kind of became a mission for me to create films that rectified that false narrative of Pakistan and Muslims. और फिर मैं इस रास्ते पे चला, documentaries पे. Although I should say कि मैंने सिर्फ documentaries नहीं किए हैं, मैंने feature films और fiction भी किया हुआ है, but still very much content-wise इस तरफ मेरी ज़्यादा तवज्जो है, social justice and human rights content में, आप कह सकते हैं. अच्छा, मो, तो फिर जो हमने देखा कि जब when you talk about events which sort of otherized the Muslim population in general in the West, but particularly Pakistanis, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा there is always a choice. या तो फिर आप जो है वो एक डायलॉग करने की कोशिश करते हैं जिस तरह आपने किया through your creative work, या फिर आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और आप कहते हैं नहीं ये मैं हूं and in your face accept it. तो आपने जो है वो एक डायलॉग का रास्ता खोलने की कोशिश की, because we see that in UK or in Europe and in US also we see a sort of resurgence of Muslim identity and especially in Pakistani expat community. तो वो चीज किस तरह डील की? Was that ever something that crossed your mind? आपसे मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि it's necessarily a binary choice कि आप या तो एक डायलॉग में करें या आप एक या तो आप एक तो मैं समझता हूँ कि I don't think
बाय द वे आप ये एडिट करेंगे या नहीं? I don't know, but मैं anyway. I don't know. Do you think we should edit some of the things मतलब that? ये अगर जैसे फोन कॉल्स आ रही No, हैं no, या that's fine. That's fine. It's just a conversation, so it should be okay. आप बताइए. हाँ, तो मैं कह रहा था मैं नहीं समझ सकता कि ये नेसेसरीली एक बाइनरी चॉइस है कि आप या तो एक डायलॉग में एंगेज करें या तो आप एक कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस करें. आई थिंक एट एनी given time आप एक artist हैं, you're doing both at exactly the same time and in a myriad of different ways and in a myriad of different contexts. ठीक है, आप जरा देखें जब मैंने शुरू किया था रिप्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं हो रही थी. आप देखें ना, मैंने अपना फिल्म करियर तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं. ठीक है, तो मेरे से पहले मतलब बहुत ही चंद लोग थे, जैसे मेरीन जब्बार हो गई, सबिया सुमार हो गई, अगर हम नॉन फिक्शन सिनेमा के, मेरीन की तो खैर नहीं है डॉक्यूमेंट्रीज में, वो तो फिक्शन, बट माहिन जिया हो गई. तो मतलब रियली फ्यू पीपल यू कैन, जमील धेलवी ऑफ कोर्स, बट ही वाज इवन बेफोरहैंड. But itne like few token you can count kitne the working on like a international kism ka realm of bringing Pakistani films or Pakistani content to the global scale. So when we started, and Sharmeen was very much in my generation too. In fact, we both worked together on our first film. Right. First film jo ki thi, Terrorist Children, we co-produced it in New York. हम बहुत पहले से किसी को जानते हैं. तो आप समझने, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि और ज्यादा स्पेस हो गई और लोग ऑथेंटिक एंड स्टोरीज का ओनरशिप एंड ऑथरशिप ये वाले सवाल अब पैदा हो रहे हैं. उस जमाने में क्या होता था, खासतौर पे आप नॉन फिक्शन में देखें, कोई ना कोई गोरा आ जाता था, होटल सरीना में बैठ जाता था. ठीक है, वो बेचारे अपने जूनियर प्रोड्यूसर्स जो पीटीवी के हैं या जो भी, उनको भेज देते थे कि जाओ इंटरव्यू करो, तालिबान को ढूंढो, फिल्म करो और वापस आ जाओ. और फिर हम वहां पे सरीना के लॉबी में बैठ के अपनी रिपोर्ट फाइल कर देंगे CNN के लिए या BBC के लिए. यही था ना सिस्टम. हाँ, एंड फिर वो बाहर जाके अपनी किताबें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने तो अपनी जिंदगी कितने खतरे में डाली थी और ये हुआ था और वो पता नहीं क्या दिला. तो ये सिस्टम ही चेंज हो रहा है ना. आप देखें, dialogue takes two, first of all, that's intrinsic within the thing. ठीक है, right. So before a dialogue is even possible, I think confrontation is inherent. And especially in the art form I do, it is कि मैं आईना दिखाऊं. ठीक है, और मेरी, आप देख सकते हैं मेरा काफी बॉडी ऑफ वर्क यहाँ पाकिस्तान में बैन भी हो गया है. यहाँ तक मुझे लंदन में भी मेरी फिल्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं. ठीक है, so excuse my language, go fuck yourself is what I'd like to say to a lot of people who watch my films. And agar aap to keh rahe hain, I'm very controversial, not deliberately controversial, but I'm very confrontational with my films. Because मेरे में ये चिर है कि हमें खुद अपनी जो हैं, अगर कोई खामियां हैं या कोई और हमारे ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, उसको हाईलाइट करें, and we hold those people accountable. And Okay, so I've got your filmography in front of me, and आपकी एक एक करके फिल्म की बात करते हैं. तो पहले Terrorist Children, you were a producer for that film. तो क्या थी फिल्म? I don't know, I'm sorry, but I've seen some of your work but not most, because पाकिस्तान में तो देखने को मिलेगा ही नहीं. खैर अब जरा रास्ते और माशाल्लाह से निकल आए हैं, खासतौर पे नेटफ्लिक्स पे चंद मेरी प्रोग्राम्स हैं, और उसके अलावा पुरानी वाली प्रोजेक्ट्स तो आई थिंक पीपल हैव अपलोडेड ऑन टू यूट्यूब, और वहाँ पे प्लीज जाके आप लोग देख लें. बट टेररिस्ट चिल्ड्रन बेसिकली उस जमाने में, अगर आपको याद है, ये फौरन 9/11 के बाद, उसमें अफगानिस्तान का काफी विलिफिकेशन हो रहा था. खैर सब मुसलमान का हो रहा था, बट अफगानिस्तान का भी हो रहा था और पाकिस्तान का भी खास तौर पे, क्योंकि वो पाकिस्तान को इल्जाम लगा रहे थे कि वहां पे जो मदरसे हैं वो एक एक्सट्रीमिज्म पैदा कर रहे हैं और दहशतगर्दी पैदा कर रहे हैं, और वो जाके ऐसे किस्म के इंस्टीट्यूशन से तालीम लेके वो दुनिया में जाते हैं, अफगानिस्तान में जाते हैं, वगैरह जगह जाते हैं और 9/11 की किस्म की सानिया कमिट करते हैं. तो ये था. एंड तो जहाँ तक
मुझे याद था, I mean, I've grown up in Pakistan too. It's not fair to say कि सभी मदरसे ऐसे हैं और ऐसा इनको बिग ब्रश स्ट्रोक से पेंट करना. तो हमने डिसाइड किया था उस जमाने में कि हम जाके खुद ही देख लेते हैं, इन मदरसों को विजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है. और आपको याद होगा नवंबर 2001 में अमेरिका ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, वो तालिबान को ओवरथ्रो कर दिया था और वो जो सब ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत से रेफ्यूजीज, न्यू रेफ्यूजीज वर कमिंग इनटू पाकिस्तान. और बहुत से वो जो रेफ्यूजीज थे, जो यंग चिल्ड्रन थे और जो ऑर्फन चिल्ड्रन, उनको मदरसों, पाकिस्तानी मदरसों ने रख लिया था. तो हमारी फोकस उस पे थी. ओके. प्रोजेक्ट का नाम था टेररिस्ट चिल्ड्रन. और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो न्यू अफगान रेफ्यूजी चिल्ड्रन पाकिस्तान में आए हैं, क्या वाकई में उनकी सोच और जो तालीम है यही इंस्ट्रक्ट इनको कर रही है. सॉरी, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं था. एंड हमने सिर्फ मदरसों में नहीं, हम गए थे, मतलब जो अफगान जो चिल्ड्रन थे जो यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे और जो गदाम में काम कर रहे थे और कालीन की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हमने सब देखा. अल्टीमेटली दे वर जस्ट रियली victims in this war. हमने ये एक उनकी सोशल वो है. अच्छा, नेक्स्ट फिल्म जो हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है बिग रिवर, जिसमें अगेन यू वर अ प्रोड्यूसर ऑफ बिग रिवर. तो बिग रिवर वाज इन 2005 आई बिलीव. तो क्या सब्जेक्ट था और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसके साथ? Big River was a feature fiction film, so it was a drama. Okay. And उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं सिलेक्ट हुआ था एट दैट टाइम. मैं अपनी ऑलरेडी मैंने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी ऑन माय अदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 2 साल बाद निकली, which we can talk about next. Sure. It's a film called Shame on Mukhtaran Mai, and it was selected at the Berlin Film Festival जो होता है उनका film market. It was like one of their top picks in the Berlin project market. And you know, I was very lucky. I mean, we selected like 12 projects, 10 projects at that time. I was one of them. तो जब मैं वहाँ था ना, एक टीम थी जापान से, Atsushi Funahashi, who was the director of Big River. और वो एक फिल्म बना रहा था, which a road trip journey through the American Southwest. मतलब and it was a very interesting story because it was a story concentrating on a Pakistani man who's from Karachi, who comes to Phoenix in search of his estranged wife. Uski bibi bhag gayi aur America aa gayi. In this film, it's a fiction film. And on his journey of trying to rekindle his life and get his wife back, uske saath ek ye tourist aur ek ye American ladki, they join him in this quest, and it ends up being a tale of friendship in a post 9/11 America, where we're seeing if like friendships can still exist in the American West, the way, you know, strangers meeting at one time. It was a very lyrical film. So I was immediately drawn to it because I'm like, yeah, इसमें एक main lead जो है वो Japanese film, but it's like a Pakistani lead. Right. It deals a lot with the themes that I like to explore. So I got to meet the director, and we kept on in touch. And then, lo and behold, I ended up coming on board as producer. And we ended up, you know, क्या हुआ था, हमने फिर उसके लिए financing raise की, and I mean, it was one of the biggest like highlights of my career. We got to get Office Kitano, Takeshi Kitano. So if you know anything about Japanese cinema, he's one of the most highly regarded, highly rated directors, Japanese auteurs and directors. So he was our executive producer. So we managed to get him attached. Wow. And yeah, I produced that movie. And mashallah, it did really well. We were in competition in Berlin in 2005. जब निकली थी, और Busan, उसकी theatrical release भी हुई. So that was what that was about. अच्छा, and then in 2006 came Shame. पहले हम शेम से बात करने से पहले बात करेंगे कि how did you view मुशर्रफ साहब enlightened moderation and वो जो पूरा एक यूफोरिया था उस वक्त कि शायद कुछ प्रोग्रेसिव्स के लिए, लिबरल्स के लिए स्पेस निकल आएगी, you know,
और निकल आई थी, I would like to think for a few years, early years of his tenure. तो कैसे देख रहे थे आप? Were you also sort of optimistic about future based on Musharraf Saab's rhetoric? Well, that's exactly what my film Insha'Allah Democracy is about. Yeah, I know, Which I know. came out much later Yeah. in 2017. Right. But I mean, yes, I was exactly in that same crew, very much in that political bubble. Okay. And then I got the chance to actually follow him for 5 years during the 2013 election cycle and afterwards. Right. And फिर मुझे हकीकत पता चली. Or basically that film, which is a political satire, is me following Musharraf while he's attempting for a political comeback, Right. his ultimate failure, and also my own political maturation and journey process, where I go from, looking at him as someone and really believing that enlightened moderation, whatever, जो भी उनका Narrative वो लेके आए थे, बिल्कुल. narrative था, और मतलब वो kind of naive sensibilities, मैं खुद भी बड़ा naive था at the start, and believing that, and then getting to know him, and then actually seeing there is no such thing as a benevolent dictator, and how he and his institution have been single-handedly responsible for the cancer in this country and for disrepairing and destroying institutions and the fallout that we're still dealing with to this day. And that realization, that was what was the most compelling thing to me. I was never supposed to be part of my own film, Insha'Allah Democracy. मैं तो उनको follow कर रहा था. A former political leader, Musharraf, attempts for a comeback. And I wanted to follow him through his campaign and his comeback and dealing with the courts and all of these things. लेकिन जब मैं उनको on a personal level जाना, and I'll tell you even now, in a really bizarre way, just on a very personal level, I'm very fond of him. I mean, Imam Nawaz, and he's a really likable nice person, otherwise, likable person. लेकिन उनकी जो political सोच है and what he's responsible for, that is at odds, obviously, with my own moral convictions. And you know what? That was the most interesting story. मेरे में जो तब्दीली आ रही थी ना, in some ways, it was very similar to many of the other people in Pakistan like me, because they went through that tabdeeli. Right. And change. So I thought that's the story. It's not the story of this, मैं मुशर्रफ हूँ या मैं इमरान खान हूँ, मैं tsunami ले आऊंगा और तब्दीली ले आऊंगा. Fuck that. Who cares? The really important thing was my own political journey of voting for the first time in my life, because I think it represented several other journeys of many other Pakistanis. Right. And अगर जमहूरियत आनी है पाकिस्तान में, तो हमें कोई savior कभी नहीं आएगा. हम खुद ही हैं अपने own saviors. And that was ultimately what the film is about. Okay. We'll come back to it. But अभी हम बात करते हैं फिर going back to Shame. Shame का बताइए, how did that happen? And you wrote it and you directed it and you produced it. So you decided that you wanted to, be on your own and tell the story the way you want to tell. Matlab, why did you buy into the story in the first place? Mukhtaran Mai is such a iconic person, and आप खास तौर पे उस ज़माने में भी देखें, उनके साथ इतनी खौफनाक किस्म की violent thing that she endured. And, instead of what was expected of her to do, even a lot of the people in our community wanted that. She said no. And she, और खुद ही अनपढ़ थी, खुद ही गई, उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज किया, और उन्होंने प्रेस से खिताब की. She was open about her story. She wasn't silenced, which is what हमारे मुआशरे में होता है ना. That's what shame is all about. कि दबा दो ये बात, चुप रहो, इसके बारे में कुछ बात नहीं करो. तो उन्होंने एक फैसला
कर लिया था उसी जमाने में कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं चुप रहा, मर जाऊं जो भी है, लेकिन ये आगे नहीं हो सकता। एंड आप यकीन करें, मैंने इनकी स्टोरी में बारे में सुना था, एंड एवरीवन हैड वर्ल्ड ओवर, काफी फैली थी इंटरनेशनल स्टोरी। तो फिर मैं उनको मिलने गया था तकरीबन चंद महीने बाद, जब उनकी स्टोरी ब्रेक हुई थी, उनसे पूछने कि मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। और मैं ये मीरवाला में गया, जो अब तकरीबन मुल्तान से कोई उस जमाने में तो खैर रास्ता बड़ा खराब था, कोई 2.5-3 घंटे का सफर है। इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एक विलेज, तहसील जतोई के बाहर, रोड्स भी नहीं, बिजली भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही कोई बैकवर्ड किस्म का टाउन, वहां पे हम गए थे इन सदर्न पंजाब। और मैं यहाँ गया, इस खवातीन से मिला, एंड उस जमाने में मतलब इट वाज माय फर्स्ट लाइक लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्री, और मैं खुद भी 22 साल का था उस जमाने से, आई वाज स्टिल काइंड ऑफ यंग एंड स्टिल लर्निंग। एंड आप यकीन करें, मैं तो अल्लाह का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में मुझे एक ऐसी शख्सियत मिली जो मुझे ऐसे जिंदगी में इंस्पायर कर सके, और ऐसी हीरोइन। वो ना तो ज्यादा बात करती थी, लेकिन एक होता है ना कि आप एक किसी को मिले एंड एकदम यूर लाइक यहाँ पे कुछ है, इसमें इसमें कुछ जन्नती है और समथिंग। आई रियली कुड फील दैट मच power and grace coming from her. And मैं आपको बता सकता हूँ, and I filmed with Musharraf, I filmed with Maulana Abdul Aziz, I filmed with Imran Khan, I filmed with Khadim Rizvi, Nawaz Sharif, in sab ke saath. I have felt nothing like that. And then even in America, I felt with huge political leaders and Afghanistan, मतलब, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं feel किया था when I met with her. Do you think, Mo, she is a unique case, या आपको लगता है कि people in the communities, people that we don't know about, people who are unknown, just to going about their lives in a right principled way, और उनके साथ injustice होता है और वो उन basic values को लेकर खड़े होते हैं, do you think they are a rarity, या वो हमारी कौम ऐसी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है? इसका आपने बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल पूछा है, और मैं आपको एक कोई स्ट्रेट अप आंसर नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम। बिकॉज अगर मैं एक बहुत ही फिलोसॉफिकल किस्म का आपको एक जवाब दूं, I think everyone has the capability of being divine at different moments of their life. Now, if the alchemy is right, and वहाँ पे कोई कैमरा था या कोई था सुनने वाले का, और फिर अवाम और दुनिया को पता चला, तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, and great, fine. But I think everyone has great capabilities. Is it rare? Is it not rare? I don't know. मुझे नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे वाक़ये हुए हों जहाँ पे आपने भी मतलब अमेजिंग कुछ डिवाइन, maybe God flew through you to get something done and achieved, and I would believe it, but I wasn't there to witness it. I was just telling you what I saw, and what I saw, 4 सालों में एक गांव जहाँ पे बिजली कुछ नहीं, औरतों को बकरियों जैसे ट्रीट कर रहे हैं, रियली, लड़कियों को एजुकेशन तो छोड़ें, को स्कूल लड़कों के लिए कुछ नहीं है। 4 साल बाद उसी विलेज में रोड्स हैं, वुमेन्स क्राइसिस सेंटर है, क्लिनिक है, स्कूल है, लड़कियों का भी स्कूल है, लड़कों का भी स्कूल है, और मतलब जो बिल्कुल ही एक अनपढ़ जाहिल विलेज, अब तो माशाल्लाह से तब्दीलियों के स्टूडेंट्स की कोई हजारों में चली गई होगी, जबकि उस चाय ने उसको जो मिला भी था जमीन हुकूमत से कि ये लें, आपके लिए हम ये गिफ्ट करते हैं लैंड, उनने वहां पे एक छोटा सा कमरा खोला, वहां पे 30 बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, एंड देन बाय द टाइम आई फिनिश फिल्मिंग इट वाज वेल इनटू द थाउजेंड्स, एंड देन शी इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वो हिलरी क्लिंटन से अवार्ड मिल रहा है इनको, ग्लैमर वुमेन ऑफ द ईयर वगैरह, एंड आई फॉलोड हर थ्रू दैट जर्नी।
लेकिन those things didn't mean a thing for her. It was nothing. वो अभी भी मेरे उनके साथ बातचीत है, अभी भी वो डट के बैठी हुई हैं, अपना स्कूल चला रही हैं, वो सब same thing. Wonderful. How inspiring. People have moved on. Yeah. लोग have moved on. अब तो और हैं human rights stories and other inspiring stories, and लेकिन वो अपना वही काम करती है, कोई दिखावे के लिए कभी नहीं था. She was the real deal. Wow, that's very, very inspiring. And in the same stride, then you did your next film, Shabina's Quest. Again, क्या story थी और कहाँ मिली, and how did you get inspired to tell another story? So Shabina's Quest was a short film, and I had begun production on Among the Believers. जिसमें हम लाल मस्जिद के जो students हैं और मौलाना साहब को थी, वहाँ पे हम film कर रहे थे. तो हम सिर्फ लाल मस्जिद में तो खैर नहीं फिल्म कर रहे थे, हम इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी फिल्म कर रहे थे वगैरह. और हमें एक स्टोरी मिली थी, दिस रियली अमेजिंग स्कूल प्रिंसिपल शबीना, जो वो भी काइंड ऑफ डट के बैठी हुई थी राइट देयर नेक्स्ट टू यू नो जो टीटीपी के जो आउटपोस्ट थे एंड ऑल ऑफ दैट, जो एंटर कर रहे थे डिफरेंट विलेजेस इन पंजाब, जहाँ पे उनका ज़्यादा जोर था. लेकिन उसको कोई नहीं था, वो तो अपना स्कूल चला रही थी, लड़कियों को पढ़ा रही थी और कह रही थी कि जो भी करना है कर लो. तो वो थी स्टोरी, which I thought was pretty incredible, and I wanted to profile her, and we did that for Al Jazeera, that for Witness, which is a shorts documentary platform. And we kind of wanted to, you know, undo a lot of like जो एक तरीके से Western media में ख़वातीनों को दिखाया हुआ है पाकिस्तान में और मुस्लिम वर्ल्ड में कि वो बड़ी मीक और oppressed किस्म की वीक हैं. मैं कहा देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है. We have some incredible women here who are very self-empowered, and I wanted to showcase that story. Sure. In 2014, Mo came Pakistan's Hidden Shame, if I got the name right. Yeah. What a dark film. That one I've seen, though. I must tell you that. Oh, it's available on YouTube, so I could watch it. You know, I've seen it long time back. What a sad and bone-chilling story to tell. कैसा experience था to document all that? I don't like to see that film. उस film ने one of the most difficult films I've ever had to make to this day. It destroyed me, you know. And आपके viewers, if they don't know what the story is, it's about basically Peshawar में हम follow करते हैं street children, छोटे children, 13 and younger, जो बस के अड्डों पे काम करते हैं और वगैरह और जॉब्स करते हैं, but they are stuck in a cycle of abuse, sexual abuse and drug use, and just devastating poverty. तो उस पे मैंने फिल्म बनाई थी. चैनल 4 जो यूके की है ब्रॉडकास्टर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप इस मौजू पे अगर फिल्म प्लीज बनाना चाहें, नहीं बनानी चाहिए, वो they wanted me to make a film on this, so I was commissioned to make it. तो मैंने फौरन हाँ तो नहीं की थी, because you know जरा सी झिझक होती है, you know it takes a real toll on you to tell these kinds of stories. Lekin, to be a little candid with you, I thought क्यों ना ये स्टोरी अगर इसमें बच्चों का कोई फायदा होता है, अगर हम उनको उनकी आवाज पहुंचाते हैं, तो चलो कर लेते हैं. लेकिन एक चीज होती है ना कि आप एक दिमाग में कुछ कंसेप्चुअलाइज करते हैं और जो आप एक्चुअली करते हैं, तो एक डिसोसिएटिव स्टांस होता है, या आप फुल उसकी इंटेंसिटी रियलाइज नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअली कर रहे हैं.
तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने अब्यूजर से भी बात की, मैंने बच्चों से भी बात की। इतनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज, यू नो। उसमें बहुत से छोटे छोटे बच्चे, मतलब 7 साल 6 साल के बच्चे, उनको घर से निकाल दें, या तो वो दे प्रेफर लिविंग आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट रादर देन लिविंग विद देयर फैमिलीज, बिकॉज देयर फैमिलीज उनको इतना तशद्दुद, इतना मारते हैं, अब्यूज करते हैं, एंड उनसे वो कहते भी हैं कि अगर आप कम से कम 50 रुपए ना अर्न करके आए तो फिर घर ही ना आओ। So they end up living on the street, and then they come once in a month to just check on their family कि कैसे हो, ठीक हो, whatever. Otherwise वो independent. How do they live? वहाँ पे slightly older kids 12 साल 11 साल उनके gangs में आ जाते हैं, और फिर वो उनको ड्रग्स पे लगा देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन पे लगा देते हैं। मतलब इतनी टेरिबल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितने असरात टू दिस डे उस फिल्म, इतनी खौफनाक फिल्म मैंने जो बनाई है। That was the shortest film production period I've ever had. मतलब it was only, हमने ज्यादा से ज्यादा कोई 2 से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते आई थिंक फिल्म की होगी, वरना usually my productions are for years and years back. मैं हिम्मत नहीं थी, जितना मैंने किया कर सकता था और मैं नहीं कर सकता था। लेकिन चलो, एक चीज अच्छी हुई कि उस फिल्म के निकलने के बाद, मैं कोई पीटीआई सपोर्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं इमरान खान का ये जरूर कहूंगा कि उनने हमें जो वादा किया था आफ्टर सीइंग द फिल्म, टेकिंग पार्ट इन इट, उनने एक वो शेल्टर होम खोला था स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, जमन खोर, एंड ही क्रेडिट्स दिस फिल्म फॉर दैट। तो अगर उसमें चलो एक बच्चे का भी फायदा हो गया ना, तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आई वाज एबल टू achieve. But Mo, did you ever question why would a foreign broadcaster want to cover this film and was commissioning you for it? मतलब एक सवाल हो सकता है, ये जहन में आ सकता है कि why would they want to tell, of all the stories, why would they want to tell this story? Did you ever have that question? Yes, certainly. I think agar aap dekhein a lot of their programming, right, not just bahut se Western broadcasters, or this opens up, especially in the last decade, or just the content and viewership, how that has kind of changed. तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, जहां तक जिस इशारे पे आप जा रहे हैं, राइट, एक तो they done these kinds of documentaries about child abuse in Afghanistan. Then they done other kinds of stories of like child brides, acid throwings, and these kinds of like really atrocious human rights things, not just in Pakistan but the world over. So that was intrinsic in the nature of documentaries. It's about exposing human rights abuses and social ills and giving voice to the voiceless, and all over the world. So that is not untrue. That is true. Ye to was pretty much on par for the course. Lekin after doing this film, aap notice karenge there was a huge shift in my own creative endeavors. Because ek taraf se, haan, you are helping the oppressed, and ye zarur aapko karna chahiye. Lekin kya aap ek colonialist Western gaze ko bhi empower kar rahe hain? आप क्या एक पॉवर्टी पोर्न बना रहे हैं उनके लिए? ये भी एक क्रिटिसिज्म आप डिसमिस नहीं कर सकते. You see, and both these things are true. It's not either or. And that is where I've always existed within that very special line. You know what I mean? कि एक तरफ से आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं बनाना दुनिया को ऐसी whatever दिखाने के लिए कि ये देखो ये कितना घटिया मुल्क है और ये है वो है. लेकिन at the same token, as a Pakistani, it is real. It's a real story. ये होता भी है. तो ये होती है कि आपकी ऑडियंस कौन है. और मैंने इसके बाद डिसाइड किया
कि मैं जो human rights films हैं और social justice films, certainly I want to continue pursuing those, but I want to change the scope. Okay, I want to feel that the people that I'm documenting should not feel in any way exploited. तो फिर आप देखेंगे मैंने जिन लोगों को उसके बाद follow किया है, they were in much more powerful positions than me. They were much more dangerous than me, and उनके साथ I didn't feel at all a privileged differential. जैसे आप कह सकते हैं. And उसकी बात जैसे मौलाना अजीज या मुशर्रफ या इमरान खान, you know. Let's talk about Insha'Allah Democracy. Musharraf Saab had said some very, very problematic things about Mukhtaran Mai, and like a lot of young people who were, you know, sort of optimistic. We had a lot of bet on Musharraf Sahab, despite all the problematic things that he had said in that particular case. आपको जब इंशाल्लाह डेमोक्रेसी बना रहे थे तो ये क्योंकि you had already worked on मुख्तार माई's case and you had documented it, तो आपको ये सवाल ज़हन में था और आपने मुशर्रफ साहब से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया इसका? इंशाल्लाह डेमोक्रेसी को तो छोड़े, मैंने तो शेम ही से वो कर दिया था. इनफैक्ट जब वो प्रोटेस्ट हो रही थी उनके खिलाफ 2005 में न्यूयॉर्क में, मैं भी उसी प्रोटेस्ट में शामिल था एंड मैं भी फिल्म भी कर रहा था. एंड अब तो मैं उनके वो मिनिस्टर का नाम भी भूल गया, लेकिन अगर आपने मेरी फिल्म शेम देखी है, वो जो हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करती है ना, मुख्तार माई के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है, इनको आज़ादी है, हमने इनको नहीं बंद किया था घर में, और वो सामने बैठी हुई ये झूठ बोल रही है मुझे बंद किया हुआ था. तो वो तो मैंने सीन उसमें इंक्लूड किया हुआ है. तो जब मैं गया था परवेज मुशर्रफ से मिलने, ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर भी बात की थी खास तौर पे, और जहाँ तक मुझे समझ में आया था, एंड हो सके क्योंकि दिस वाज स्टिल इन द अर्लियर पार्ट ऑफ मी फॉलोइंग मुशर्रफ, मैंने उनकी लाइक डिसमिस कर दिया था कि ये इनने इसके बारे में ज्यादा कुछ गहरी नहीं सोची, ये इनने स्टूपिडली ये कह दिया, लाइक यू नो foot and mouth किस्म का comment without actually thinking through कि ये क्या कह रहे हैं. Because at the same token उनने मुख्तार माई को at least उनके जो स्कूल इनिशिएटिव्स थे या जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो चीजें थी वो सब वो सपोर्ट भी की. Right. तो उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स और वो सब वो किए. Although in retrospect वो कोई फेवर नहीं है, हुकूमत को तो वैसे ही करना चाहिए. बिल्कुल. हाँ, I'm sorry, आप मुझे बस एक मिनट देंगे? ये एक मिनट नहीं, सेकंड, बार-बार ये मुझे ये कॉल करना है. आप ले लीजिए. Gee, so you were telling me about your thinking that Musharraf Saab actually, you know, didn't realize the consequence of his statement on Mukhtaran Mai. I don't think he'd really thought of it much through. I mean, just like many army men. And frankly, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं थी इनके तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जो ऐसी किस्म की स्टेटमेंट हो. इनफैक्ट अगर आपने इंशाल्लाह डेमोक्रेसी देखी है तो उसमें तो बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो you know, I mean, it's kind of the reason I made the film into a comedy. So yeah. Okay. अच्छा, तो फिर वो that dream also didn't work out, और उसके बाद फिर आया The Accused. Ghazi साहब के साथ कैसे, Mo, how did you even think about making a film like that? Because people were ready to, you know, people were not even ready to acknowledge that this existed in our capital. You know, ये हो रहा था और ये हो रहा है और ये element exist करता है. Well, I'd had some experience prior to this. ना आप याद करें मैंने Among the Believers भी बनाई थी जो लाल मस्जिद के operation in 2015. तो BBC had first approached me कि वो चाहते थे कि एक documentary बने blasphemy law पे. तो मैंने फौरन इनकार कर दिया था. It's an extremely dangerous topic too. Exactly. Yeah. And मैं नहीं करना चाह रहा था. लेकिन as luck would have it, मैं 2000 I think क्या था 2000
17 था। 17, तो हाँ। मैं इस्लामाबाद ही में था जब वो क्या कहते हैं, जो उनका वो धरना हो रहा था, उन्होंने वो पार्लियामेंट बंद कर दी थी और सब रोड बंद कर दिए थे, जब रेंजर्स ने फिर ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया था। और मैं खादिम हुसैन इस्लामाबाद रिजवी ही साहब बच आए गया थे, था बिल्कुल बिल्कुल। OTLB वाले। एंड मुझे उस रात ही कराची जाना था, बट आई एंडेड अप बीइंग स्टक इन इस्लामाबाद फॉर अ फ्यू डेज। और कोई खास टीवी नहीं, कुछ नहीं, तो हमें मालूम नहीं कि उस जमाने में क्या हो रहा था। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ओ आई थिंक कू आ गया है, कुछ हो रहा है, पता नहीं यू नो। लेकिन फिर टीवी वापस आया और फिर हमने देखा कि वो जो लोग, जो प्रोटेस्टर्स थे TLP के, ना उन्हें एक तो हमारी पार्लियामेंट को ही रुकवा दिया, बंद करवा दिया, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनली, एक्स्ट्रा जुडिशियल। लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया, जो पार्लियामेंट पास हुई थी वो वापस रिसेंट करवाया, और फिर उसके ऊपर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सबको 1000 रुपए नोट दे रही है, माफी मांग रही है। तो मैंने कहा ओ हेल नो, इसको तो नहीं, we cannot let this be. And then that is when I decided I am going to make a film on the blasphemy law. And I did it in a way, in an editorial lens, Joe wouldn't be as dangerous. It wasn't like I was going specifically against the law or anything like this. मैं तो आपको दिखा रहा था कि ये जो law है, इसकी actual interplay क्या होती है, and how is it actually used politically on ground. और मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं एडिटोरियलाइज बहुत कम करूं, एक्सेप्ट फॉर इंशाल्लाह डेमोक्रेसी, जहां पे इट्स अ फर्स्ट पर्सन डॉक्यूमेंट्री। बाकी मेरी जो भी फिल्में हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको दोनों साइड्स दिखाऊं, सब कुछ दिखाऊं, आप खुद ही देख लें, आप खुद ही फैसला कर लें, राइट। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम ये खादिम हुसैन रिजवी और जो TLP पार्टी है, हम इनको फॉलो करेंगे इन द 2018 इलेक्शंस, and their use of this platform of the blasphemy law, and to, you know, consolidate and grow their political power. And then obviously feature some stories who are pushing against this and are in danger and are falsely accused of blasphemy. हम वो भी cases पे हम follow कर लेते हैं। तो top to bottom में ये mechanism एक दिखाना चाह रहा था कि what is the interplay of politics and कैसे। तो I would be remiss कि अगर मैंने अपने इसमें अपने को-प्रोड्यूसर्स जो हैं सैयद मुशर्रफ शाह और मोहसिन अब्बास, जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, उनकी बहुत, उन्हीं की वजह से a lot of, I mean, I'm nothing without my team, not just on this project, but I must say on all of my projects, खासतौर पे जो मेरे साथ लोग काम करते हैं and people who partner with me. We were able to get the access, in fact, with Khadim Hussain Rizvi, and conduct these interviews through a lot of the producers that I work with. इन्हीं की जो मैं बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ शाह and मोहसिन अब्बास। अच्छा, अब मैं अगर वो आपसे कहूँ कि आप थोड़ा सा हमें अपना एडिटोरियल टेक भी दें। Did Khadim Hussain Rizvi Saab actually, was he a politically ambitious and motivated person, or did he actually believe in the cause that he was sort of projecting? आपको मैं बताऊं, एक तो आप इनकी जरा स्लोगनियरिंग को देख लें, कि आप TLP को वोट दें, टिकट कटाओ और फिर जन्नत में अपनी जगह हासिल करें। आई मीन, तो ये भी आप जरा स्लोगन देख लें इनका। एंड मुझे अभी तक याद है, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स जब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, वो जी कह रहे थे कि लोग इतना तो कहते हैं कि बाबा जी आपके लिए तो हम दिल जान देने को तैयार हैं। वो क्या जान देने को तैयार है, वोट तो दो, यू नो। करबला की तो बड़ी बातें करते हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं करते। ये इनकी ये थी सोच, इतने मतलब वो नार्सिसिस्टिक, और इनकी यही थी सोच। एंड
Huh, he fully believed in his message. I wouldn't say he was fake about it or anything. I think he was extremely, really believed it. He was also quite delusional and narcissistic. But unki jo messaging thi, aside from the blasphemy law, and it was caged around a very populist message. ठीक. वो खुद कहते हैं कि आप अगर मेरी कोई घड़ी है या कोई कपड़ा है जो 1000 रुपए से ज्यादा भी है तो मेरा गला काट दो and all of that. And he related to the common man and a lot of people who have been largely ignored. I mean, every single government that's come in. So उनके लिए this guy was a really palpable force. And that's why he was able. आप देख लेना कि 2018 के elections में इतनी new party ने कोई 22 lakh votes had. It's pretty incredible. And like next time probably we'll see more of them in the assemblies. Maybe Allah na kare, but yes, maybe. अच्छा, going back, sorry, I missed the film जो कि हम जिसकी बात हमें करनी है, वो भी है Among the Believers. गाजी साहब के साथ आपने बैठ के डायलॉग किया. How was that experience? And वो भी बड़े unapologetic हैं about the things that he has done. हाँ. Although I will say उनका हो सके जरा सा different situation है, but मौलाना साहब का ये था कि मौलाना साहब के साथ भी हमने बड़े साल गुजारे, ठीक है. And initially तो वो जेल से निकले ही थे, and I think चंद महीने बाद ही हमने उनके साथ फिल्मिंग शुरू कर दी थी 2010 में, फिर eventually 2011. And he's a very वो भी बड़े nice and kind, very approachable आदमी है, ऐसा तो नहीं. और हमने उनके साथ पहले से बता दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम देखें 2 स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, एक लाल मस्जिद, एक जो रेगुलर स्कूल, और हम मतलब दुनियावी तालीम और जो आप तालीम हासिल करते हैं, मतलब एजुकेट करते हैं, उसके असरात क्या होते हैं बच्चों की सोच पे and all that. So he was very open to it. He was fine, in fact. And मैं कह सकता हूँ कि वो pretty consistent रहे हैं अपने narrative में. And मतलब eventually उनके साथ भी हुकूमत kind of उनको I think कोई बहुत सी land sector A या I में मिल गई to build new Lal Masjid and ये सब. So the question is, it's not कि ये लोग क्या बहुत ही Machiavellian players हैं या, I mean in some ways they kind of are, लेकिन हमारी जो हुकूमत भी है ये इन लोग को बड़ी placate करती है, sponsor भी करती है, और हमारी establishment और frankly इनको back भी करती है. And what better way to push through your agenda than by using fascists and despots and religious fanatics and religious fascists. अच्छा, वो मुझे ये बताएं कि in your view, अच्छा, as a storyteller who's telling stories from this land of these people, हमारी कहानियां हैं, do you ever get frustrated by the fact कि हम आपके जिनकी कहानियां हैं, जिनके बारे में हैं, जिन लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो लोग देख नहीं पाते? As a documentary filmmaker, how frustrating would that be? Extremely frustrating and upsetting. पर अब जैसे Among the Believers तो बैन ही हो गई थी ना यहाँ पे पाकिस्तान में, because वहाँ पे पाकिस्तान की सेंसर बोर्ड ने, हम इस्लामाबाद में स्क्रीनिंग करने वाले थे और हमने वो बैन कर दी कि वो कह रहे थे कि this shows Pakistan in a negative light in the context of the ongoing fight in the war on terror. मैंने कहा भाई लोगों ने कोई खास तो नहीं किया था ना, इनके साथ जो है सो है वही दिखा रहे हैं, हमने अपील भी करने की कोशिश की डिसीजन को, वो भी रिजेक्ट हुआ और फिर बैन हो गई फिल्म. और जब फिल्म बैन हुई थी उसी वक्त मुझे और मेरे क्रू को बहुत सी सोशल मीडिया पे थ्रेट्स मिलने लगे, हमें कॉल्स मिलने लगी कि हम आपका ये कर देंगे और वो कर देंगे. बहुत से बेसिकली हमारी फिल्म जो है वो लॉन्च हुई थी ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में इन कंपटीशन, काफी और बहुत बड़े उसको कवरेज मिली थी राइट अवे. वो फेस्टिवल हिट थी माशाल्लाह से. और तो बहुत सी जो सोशल मीडिया की जो रिएक्शंस आ रहे थे
वो उनने मूवी देखी नहीं थी, वो बस प्रेस, जो फॉरेन प्रेस थी जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वैरायटी या वॉशिंगटन पोस्ट, जो भी हमें रिव्यूज मिल रहे थे, उसको पढ़ के वो कह रहे थे कि इनने कोई फिल्म बनाई है मौलाना साहब के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, और ये बात फैलने लगी, जिसके फौरन बाद मुझे रियली सीरियस एंड स्कैरी थ्रेट्स आने लगे। मुझे तो इनफैक्ट मेरा जो प्रोड्यूसर है, ही हैड टू मूव हिज हाउस। मुझे भी अपनी मैं आई लिव बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, आई स्पेंड इक्वली बिटवीन द टू प्लेसेस। तो मैं उस जमाने में मैं अमेरिका था, तो मुझे अपनी वालदा और बाकी जो फैमिली है उनको भी शिफ्ट करना पड़ा अमेरिका फॉर फ्यू मंथ्स, एंड रियली अजीब मामले हो रहे थे। एंड देन फिर एक स्टोरी पब्लिश हुई उस एक लोकल अखबार में कि, और मेरी तस्वीर भी उसमें डाल दी, मौलाना साहब के साथ में बैठा उनको फिल्म कर रहा हूँ, और उसमें ये लिखा है कि हमने मौलाना साहब को बेसिकली खुफिया कैमरा और झूठ बोल के ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो बिल्कुल ही सरासर झूठ है। ओके, मैं मैं बहुत ही कंस्पिक्यूअस इंसान हूँ, मैं कोई ब्लेंड इन नहीं होता, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा साइज भी है, मैं किसी को गुड लक कि मैं कुछ भी छुप के फिल्में कर करता हूँ। हाँ, मैं छुप के कुछ भी कर रहा हूँ। ओके, उनको मालूम था मैं वहां था, वहां पे सब लाइटें भी थी, कैमरा था, और 5 साल के लिए ऑन एंड ऑफ उनको फिल्म कर रहा था, तो ये सरासर झूठ थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें वापस शेर के पिंजरे में जाना होगा। सो वी वेंट टू इस्लामाबाद, एंड वहां पे हमने मौलाना साहब को बिठाई, और उनको बिठाया, और आप उनको मैंने अपना लैपटॉप सामने डाल दिया, आप मूवी देखें। उनने मूवी देखी, एंड आई रिकॉर्डेड हिम वाचिंग द मूवी, एंड देन आई हैड हिम इशू अ स्टेटमेंट, आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने कहा कि ये आपने बस हमारे मुआशरे का दो पहलू दिखाए हैं, बिल्कुल ठीक दिखाया है, कोई मसला नहीं है, मैंने जो बातें कही थी वैसे ही आपने दिखाई हैं, मैं तो नहीं समझता कि इसमें ऐसा कुछ भी है कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। फिर मैंने वो वीडियो, उनकी जो टेस्टिमोनी है वो ली, और मैंने तकसीम कर दी सोशल मीडिया में अपलोड करके, और फिर हमारे थ्रेट्स जो हैं डिसिपेट हुए। तो इट वाज अ वेरी स्कैरी सिनेरियो, बट एनीवे, that film was released on Netflix. So despite Pakistani censor board banning it, at least Pakistan में लोग Netflix पे access कर सकते थे, तो they were able to see it. फिर बाकी जो फिल्में हैं, अभी जो सीरीज मैंने एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की हैं, वो अभी नेटफ्लिक्स पे अभी तक चल रही है, टर्निंग पॉइंट 9/11 सितंबर में निकली थी। और फिर बाकी अगर आपके पास Amazon Prime है, you can watch Insha'Allah Democracy, yeah, Vimeo पे, and Accused, unfortunately you cannot watch here, although मैंने यहाँ पे screenings की हुई हैं private, and अगर आपके viewers कोई फिल्म नहीं देखना चाहते हैं, they can always get in touch, मैं बहुत खुशी से share links with you. Although I think चंद लोगों ने अपलोड कर दी थी, Among the Believers को भी, पाकिस्तान से शेम को भी, शेम को भी यूट्यूब पे, मेरी पुरानी में शेम तो मैंने शायद देखी है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, वो मुझे ये बताएं कि do you think now that so much time has passed and you're continuing to tell more stories which may be a bit uncomfortable for people to watch and face, do you think the space has increased or has it diminished? Because हमने देखा अभी सरमद की फिल्म भी लोगों ने देखी नहीं, लेकिन एक नैरेटिव चल पड़ा और वो फिल्म आज तक नहीं आ सकी, जिंदगी तमाशा की बात कर रहा हूँ। So do you think things are getting better? कुछ हम more tolerant हो रहे हैं, कुछ agreeable हो रहे हैं to आप अगर बात इशारा करें specifically about talking about the blasphemy law, on that specific, I don't know कि parameters क्या हैं, कि अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं. I mean, मैं तो कह सकता हूँ on a very practical standpoint, the law is still in place, and अभी तक vigilante justice takes place, just as you know earlier this year, जो इतने खौफनाक किस्म की things हुए थे, जहाँ पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए थे, जहाँ पे alleged blasphemy के ऊपर, तो ये तो अभी तक ये वाक़या हो रहे हैं. लेकिन आई थिंक हो सके जो फर्क है कि अब लोग in some capacity, and even the government is actually holding those people जिन्हें ये vigilante justice की थी somewhat accountable.
even TLP party workers उस जमाने में उनके ऊपर crackdown तो हुआ था, वो जो post Asia Bibi वाले protests थे, and आप ये भी कह सकते हैं कि Asia Bibi को she was eventually acquitted. It shows a small but necessary step in the right direction. So maybe I'm being overtly optimistic. I don't know. But agar hum is legislation ko, and people are genuinely engaged in it and genuinely speaking about it, just Arafat Mazhar ki NGO ho gayi, and Jibran Nasir ke saath usne wo social media ke videos banaye hue hain explaining the history and the relevance of 295C law. So ये चीजें नहीं थी इतनी in the focus. But सियालकोट जैसा वाकया हो जाता है ना, मिसाल खान हो जाता है. हाँ, but ये पहले भी होते थे, right? But आप ये भी वैसे ये आप कह सकते हैं, it is also through the social media that these attacks have become maybe more frequent. ये आप जरूर कह सकते हैं. So I don't know, it's a mixed sword. Maybe people are more willing to talk about it than they were from a critical perspective. Right. Maybe you can say that's a positive development. Okay? The negative development though is obvious. कि attacks अभी भी हो रहे हैं, and in fact increased rate. It's more easier to mobilize people and to rile them up and to gather them and to sort of channel them towards anybody who's accused, और वो आप जाएं और जाके वो mob जो है वो उसके बाद out of control हो जाता है. अच्छा मुझे बताएं, मैंने changing tracks, मैंने ये कुछ जो मेरे भी हल्के में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं लोग, यंगस्टर्स, फिल्म मेकर्स हैं, पढ़ के आए हैं, कुछ ने वैसे सीखा है, शौक से कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल होना चाहिए ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जो नोटिस तो हो. ये क्या यर्निंग है कि वो कहानी नहीं सुनानी, पॉजिटिव तो खैर सुनानी ही नहीं है. आपने भी कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा सा बिटर ट्रूथ तो दिखाना ही होता है, लेकिन consciously sort of honing in on and zooming in on something controversial, ये क्या बात हुई? Well, हम पहले शुरू करते हैं जब आप कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव कोई डॉक्यूमेंट्री बताएं. तो पॉजिटिव, what is positive documentary? That's propaganda. ठीक है? Look at the art form of documentary is तंकीद, it's criticism. तो अगर हम पाकिस्तान से नहीं होते, अगर हम ब्राजील से होते या फ्रांस से होते, या आप उनकी भी फिल्म्स देख लें, उन्हीं जो वहाँ के इंडिजिनस फिल्म मेकर्स हैं, they have done very much the same thing. They're holding their society to account. That is the art form of documentary. That is the art form of journalism. It's criticism. It's revealing the truth. Of course, there can be positive elements to it too, but अगर आप कोई project बना रहे हैं with the singular purpose of showing a positive image, तो फिर आप जी ISPR के लिए बनाने लगे, and that's propaganda. I mean, and good luck finding anyone to support you for that. I don't think you, I mean, whatever. Controversy, I don't think it's controversy, but you need compelling stories. वरना controversy तो आपको बहुत सी controversies मिल सकती हैं दुनिया भर, but that doesn't mean कि a global audience or even a Pakistani audience would be necessarily interested unless you can frame it in a very compelling manner. And that is no easy task. This is an extremely challenging and very highly competitive field. But it's also thoroughly amazing, and I love it, and won't change it for the world. So, yeah. Okay. And Mo, where do you draw the line between news reporting and documentary? How do you differentiate the two? Because you're saying कि editorial भी आप नहीं डालते हैं या कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा editorial input ना हो उसके अंदर, तो फिर मुझे बताइए. So, well, except for example, just have Insha'Allah Democracy, which is entirely editorial, because it was told from my first perspective. Well, I should first clarify, I don't really consider myself a journalist. I consider myself a filmmaker, and जो मैं
films करता भी हूँ, feature documentaries करता हूँ. That's actually different from current affairs documentaries. Of course, there's a current affairs topic and like content overlap, वो आप जरूर कह सकते हैं. लेकिन उसका जो style of documentary है ना, current affairs जैसे आप देख लें, unreported world हो गया या जो ये, वो जरा सी अलग projects को समझी जाती है. जो वो ज़्यादा उनकी production life cycle is a lot shorter and it's a much faster turnaround. Vice News जैसे बहुत सी documentaries हैं. मैं बनाता हूँ long form documentaries which are in itself like cinema verite या non-fiction cinema जिसे हम कहते हैं. That's the space I operate in. And that's very much about emotion and like cinema itself and art. There is no such thing, even in journalism, with to say कि इसमें 100% objective है. ठीक है? Subjectivity तो होनी ही है. हमारी पास आंखें हैं ना, आपने आंखें खोली है, वहीं से आपकी subjectivity शुरू हो जाती है. I'm also, you know, I turn on my camera, the subjectivity is present. I try my best though, कि अगर मैं एक traditional villain को भी दिखा रहा हूँ, कि उसकी भी मैं इंसानियत दिखाने की कोशिश करूं, उसको भी एक इंसान की तरह पेश करूं. Ultimately, that's why Maulana Abdul Aziz, when he saw Among the Believers, उनको कोई नहीं था उस फिल्म के साथ मसला, because वाकई में हमने उनका कुछ exaggerate नहीं किया था या कुछ झुटलाया नहीं था. ना तो मैंने उनको कोई नमूना या caricature बना दिया था कि जी ये एक जिहादी मौलवी है, इसकी दाढ़ी है, इसकी झाग निकल रही है और कलिशनिकोव के साथ भाग रहा है. ऐसा कुछ नहीं था. ये एक गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दे रहा था, जेन्युइनली उनको उनकी हिफाजत कर रहा था. He was providing them with housing and food and giving them school. So a lot of, again, he was stepping in and filling on a social need जहाँ पे हमारी void है, जहाँ state fail करती है. State fail कर रही है, तो he was, तो और वो मैंने दिखाया, वाकई में वो कर रहा था. Obviously, politically, सियासी हमारे इख्तिलाफात हैं, ideologically हमारे इख्तिलाफात हैं, but you know, तो अब ये अब viewer ultimately can decide कि मैं कितना वो जो line है क्या मैं cross करता हूँ या नहीं. I know I'm stretching it more. मैं दो सवाल मेरे और हैं, उसके बाद we'll just close it. Sure. If you can take two more questions. One sure. is कि आप किस तरह देखते हैं अभी जो एक नई लॉट आ रही है, you know, documentary filmmakers की, do you find them कि वो समझ रहे हैं क्या करना है, कैसी कहानियां सुनानी है और किस तरह सुनानी है? Are they on the right tracks? Pakistan में. I think I am so super impressed by the new crop of filmmakers that are coming up in this new generation. And I mean, they are smart, they're brilliant, and they're telling such compelling and engaging stories in such a meaningful way. And I mean, Hira Nabi ho gayi, itni amazing filmmaker hai. She's Lahore based. उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी अभी सनडांस में, उन्होंने गदामी में की थी. फिक्शन में भी आप देख लें, जैसे हमजा बंगश की जो शॉर्ट्स हैं, लोकार्नो में उनका सिलेक्ट हुआ है. एंड देन ऑब्वियसली सीमा बुल, उनकी भी अभी शॉर्ट थी सैंडस्टोन. अगर आप नॉन फिक्शन सिनेमा की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो जैसे हया इकबाल हो गई, तहजीन बारी हो गई, अनम अब्बास हो गई, डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, they do some really compelling and amazing, great work. And not just that, they actually have made gateways like Doc Gilgit and Doc Balochistan, and actually hosted filmmakers from, like, I mean, Lahore, Islamabad, Pakistan, even Peshawar, Pindi to an extent. Yahan se to they have a little more access into like filmmaking and also. I mean, but they actually are going to like areas where jahan pe nahi hai, you know, traditional outlets for a lot of the local artists and filmmakers to pursue. And unko wo saath workshops kar rahe hain, unko grooming or training kar rahe hain to get into non-fiction cinema. So it's really just incredible and it's amazing.
अभी मैं फिल्म्स पे उनका जो फेस्टिवल होता है लम्स पे मैंने उनकी नॉन फिक्शन जूरी पे अभी सर्व किया था तो आई एक्चुअली सॉ अ फ्यू फिल्म्स दैट वर इन कंपटीशन फ्रॉम ये डॉक बलूचिस्तान का ये जो वर्कशॉप था वाज really impressed. So yeah, it's incredible. And they're Right. indigenous stories, you know, it's beyond आप कहते हैं जी जो ट्रेडिशनल नैरेटिव अब लोग सब यूज्ड टू हो गए हैं जी टेररिज्म का या ह्यूमन राइट्स ये जो भी So glad to hear that. अच्छा मो मुझे ये बताएं आखिरी सवाल what's next, what can we expect, what's coming, and why not feature films, fiction feature films for Pakistani screens? I'm actually working on 2 right now. Okay. I'm in the process of development on 2 of them right now when I head back to the States. तो Insha'Allah और उसके अलावा मैं अब सीरीज भी काम करने लगा हूँ आई थिंक सबसे जो मैंने अभी जो नेटफ्लिक्स की जो मैंने सीरीज की थी माशाल्लाह से दैट वाज a huge global hit. In fact, it was in the top 10 for 2 weeks worldwide. Nice. So Yeah, congrats on that. Yeah. Thank you. तो उनके साथ अब मैं और क्या कहते हैं सीरीज पे भी काम कर रहा हूँ or streaming projects. So there's a few different projects at work, and inshallah, you know, I hope to share some stuff with you soon. I can tell you, मैं अभी एक और भी फिल्म कर रहा हूँ, but in Afghanistan. Oh, okay. Okay. वो अभी production में है. In fact, हम अभी काबुल में फिल्म कर रहे थे last month, which is why I'm here, and I'm heading back to LA soon. All right. Thank you so much, Mo. Thank you for your time. Stay safe. Keep telling good stories and honest stories. And we're looking forward to your next one. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure talking to you. Pleasure talking to you.